गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडेज क्लास हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक ये वाले सारे टॉपिक कर लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेराडेला। इसके अंदर हमने कर लिया था जनरेटर। आज हम करेंगे इंडक्शन स्टोव एंड इलेक्ट्रिक गिटार। सो आर यू नो अबाउट द इंडक्शन स्टोव? दिस वन इज द इंडक्शन स्टोव. Induction stove and AC current in a coil in the stove top produces a changing magnetic field at the bottom of metal pan. The changing magnetic field gives rise to a current in the bottom of the pan. Because of the pan has resistance, the current heats the pan. If the coil in the stove has low resistance, it does not get hot, but the pan does. An insulator would not heat up on an induction stove. An induction cooking container's size, shape, and positioning is very important to achieve maximum output. Only ferromagnetic material like enameled steel, cast iron, and stainless steel designed for induction can be used for induction cooking. Transformer. A transformer is basically two coils of wire wrapped round each other or wrapped around an iron core. A transformer is a device for increasing or decreasing an AC voltage. This one is the diagram of the transformer. Primary coil input and secondary coil output. This one is the step up ट्रांसफॉर्मर. हमें कैसे पता चला कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है? क्योंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर देखो जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैसी हैं, कम है, लेकिन सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैसे हैं, ज़्यादा है ना. तो इससे हमें ये पता चला कि ये क्या है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है. स्टेप डाउन में क्या होगा, जो प्राइमरी कॉइल होगा इसके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी, और सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, जो आउटपुट वाली कॉइल्स हैं इनके अंदर नंबर ऑफ कॉइल्स कम होंगी. तो वो हमारे पास बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. क्लियर. ये एक आयरन की कोर है और उसके दोनों साइड में इस तरीके से हमने क्या किया, कॉइल लगा दी. और यहाँ से जो इसकी इनपुट है देखो वो हम कहाँ से देंगे, प्राइमरी कॉइल से देंगे. तो व्हेन एन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी कॉइल it induce an AC voltage in the secondary coil. So a step up transformer increase the output voltage in the secondary coil. Step up का मतलब कि यहाँ पे जो आउटपुट कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर वोल्टेज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर रिड्यूस इट. लेकिन स्टेप डाउन में क्या होगा कि जो वोल्टेज है वो क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. द AC वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल causes a magnetic flux change given by Vp is equal to Np delta phi b upon में delta t. Np is the number of coil in primary. Same, the changing flux which is essentially carried in the transformer core induce an AC voltage in the secondary coil is given by secondary के लिए इस तरह की इक्वेशन. डिवाइडिंग द टू इक्वेशन गिव द ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन. सेकेंड को हम क्या करेंगे, फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे. वी एस अपॉन में वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन में एन पी. देन फॉर ए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर if ns greater than np and vs greater than vp, the voltage is stepped up. For the step down transformer, ns less than np and vs less than vp, the voltage is stepped down. A transformer that step up the voltage simultaneously and step down the current, and transformer that step down the voltage and step up the current. Energy must be conserved. Therefore, in the absence of losses, the ratio of the current must be the inverse of the ratio of turns. Power in is equal to power out. Vp into Ip is equal to Vs into Is. So
IS अपॉन में IP इज इक्वल टू NP अपॉन में NS. Losses in transformer. In practice, real transformers are less than 100% efficient. Resistive losses in the coil, which can be reduced by making their cross-sectional large and by using high प्योरिटी कॉपर. अगर प्योर कॉपर होगा तब भी इसके अंदर लॉस होगा, और अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा होगा तब भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर लॉस होगा. एडी करंट लॉसेज इन द कोर विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय लैमिनेटेड द कोर. Lamination reduce the area of circuit in the core, so reduce the EMF and current flowing in the core and energy loss. एडी करंट की वजह से भी ट्रांसफार्मर में क्या होता है, लॉसेस होते हैं. तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो वो आयरन की कॉर्ड ली थी उसके छोटे छोटे हम क्या बना लेंगे पार्ट्स, और उसको बाद में क्या कर देंगे ज्वाइन. तो उससे क्या होगा कि जो लॉसेस है वो कम हो जाएगा. हिस्टेरिसिस लॉसेस इन द कोर, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप हो गया है ना, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, हिस्टेरिसिस लॉस भी होगा. द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन कर्व आर मैग्नेटिक मटेरियल are often a little different, and this means that the energy required to magnetize a core, the difference in energy is lost as heat in the core. Geometric design as well as material of the core may be optimized to ensure that the magnetic flux in each coil of the secondary is nearly the same as that in the each coil of the primary. Electric guitar. An magnetic pickup consists of permanent magnet with a core of material such as alnico or ceramic wrapped with the coil of the several thousand ton of fine enamel copper wire. The pickup is the most often mounted on the body of the instrument. The permanent magnet magnetizes the steel string above it. This one is the electric guitar. The output of the amplifier is sent to the loudspeaker, which produces the sound wave we hear. When the string vibrates at some frequency, its magnetized segment produces changing flux through the coil. The changing flux induces an EMF in the coil that is fed to on the amplifier. The output of the amplifier is sent into the loudspeaker, which is produce the sound wave we hear. This one is the electric guitar. This one is the not your syllabus, but it is just for the knowledge. Thank you.